ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ಅವರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ ಸುರೇಶ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಆದಿಮಹೇಶ್ವರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಸತೀಶ್ ಇವರಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಅವರು So I request two team captain please report in the pitch for the toss ceremony. Captain of Young Friends as well as captain of New Star Friends Bhopal. Please report here in the pitch for the toss. ಜ್ಞಾನಚಿಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. The captain of both the team please report here. So here is captain of Young Friends Ajmal and captain of the New Star Bhopal's captain Vikyat and shaking the hands, and Satish will go into toss the coin. Of course Ajmal will go into toss the coin. The call from captain of Bhopal. Heads is the call, but it's the tails, and the captain of Young Friends who won the toss. And Ajmal, you won the toss. Congratulations. And what you are going to decide here? I decide to ball first. Decide to ball first. All the best. How much runs you want to restrict the opposition in the stipulated 8 overs? 8 overs. 50 plus is very good score from this ground. So you want to restrict them below 50 so that you can win the match. Okay, congratulations, all the best for the cricket tournament, and it's over to commentary box. Thank you.
So welcome back after that inaugural ceremony, and the news from the center is after winning the toss, captain of Young Friends Suruva, they elected to field first, and it's going to be the start of this cricket tournament as Adhimaheshwari cricketers are celebrating their golden jubilee, the very successful run, and one of the oldest team in South Kent district, Adhimaheshwari cricketers. Once again, I would like to personally congratulate Adhimahesh cricketers for their wonderful journey, the successful journey, the 50th year they are going to celebrate. And on behalf of myself, Satish Salyan, and on behalf of my team, Hanuman cricketers, I would like to congratulate Shri Adhimaheshwari cricketers for their the successful journey, and wishing them a long journey in this field of cricket and cultural activities. At the same time, I request extra player from both the teams. Please report in commentary box. If there is a jersey number, no problem. So, coming back to this cricket tournament, of course, it's a wonderful opportunity for the cricket lovers, because one of the most prestigious cricket tournament in the name of Adhimaheshwari Trophy 2021. This is their 21st cricket tournament, and out of their 50th years, they are successfully organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Adhimaheshwari Trophy 2021. So right back into this game, and two umpires walking towards the middle for this the match. Officials, most experienced campaigner, umpire Sriraj of Gori Young Boys, former cricketer as well, and Mr. Farooq Ullal at square leg will go into officiate this cricket tournament. And this is day number one, as Young Friends Suruva captain won the toss. No hesitation in his mind, he will go into ball past, and Atif has got a ball in his hand, and right-handed batsman Dhanush will go into face his first delivery. 8 overs match. It's going to be there will be no condition of the power play because of the dimension of this cricket ground is concerned, not that much of a huge ground, so that no question of power play. Straight away the first delivery, and batsman Dhanush off the mark, quite confidently played that reverse sweep down to backward point region for a single. With that single, friends, new star Bapal, they open the account with the single, and even Dhanush is open the account with the single. So Naveen and Dhanush, that means left and right combination. Left and right combination. Here is Atif bowling away from Azza. Balls a big wide. They're going for the extra, and here comes a throw. Chance of run out. Atif missed it. Naveen almost looks like he's struggling to reach his home in the non-strikers, and if it's a good throw from Imtiaz, then certain chance of run out which is missed out. So it's a golden opportunity missed out by the Atif, and of course Imtiaz. Atif little bit not quite able to collect the ball, so that Naveen survived from that run out from Chidanand Naik. And for what and a delivery, that was a magnificent delivery there from Atif. What a great pace in that delivery. Batsman completely beaten by the pace, as Dhanush not quite able to move his feet, and in a fraction dull ball almost done the job here. Atif picks a big wicket here of Dhanush, and friends, new star Bapal lost their the first wicket in the name of Dhanush, who was out for one with the beauty of the delivery, almost yoking the batsman. Such a fantastic delivery in the occasion, bowled there by the bowler Atif to send Dhanush back into pavilion. 3 for the loss of one wicket. They lost their first wicket. For the cricket lovers, is one more good news is that this tournament will go into
have a live telecast from Abhimatha YouTube channel, and those who are difficult to come here and watch the match, you can watch the match in your mobile by uploading Abhimatha channel in your YouTube, and you will get the live telecast of this wonderful cricket tournament in the name of Adhimaheshwari Trophy 2021. The next delivery, the previous delivery, almost one more good delivery which is coming into the batsman quite sharply, and Prashant in the negation has got no answer for particular delivery from the Chidananda Nayak, and balls down the leg stump. Batsman tried to swap that one, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump, Mansoor, of course, completes the job. There is no possibility of any run. It was shackling start in the first two deliveries there for Matif, and straight away he's back into his line and length quite strongly, and he just started to create the problem for the batsmen of New Star Bhopal. Down the leg stump, ball was deflected from his legs. Batsman might be towards a wide delivery, but batsman standing well outside the line of leg stump, so that ball has got a little bit deflect from his legs, so there's no chance of any run. Ball went towards a short fine leg region. One more dotted delivery. Atif from the Chidarandak and swept that one down to square leg region. Sharan the fieldsman there in the square leg fields the ball. The small ground, no question of getting more than single in that last delivery of the over. So first over completed. After first completion of first over, and searching for the right track, New Star Bhopal has got 4 runs, and they lost one big wicket. Coming back to this cricket tournament, everybody knows that Adhimaheshwari cricketers, Adhimaheshwari Sevas, Vaidyanath Seva Samiti, one of the oldest organization in the South Kent district. They are completing their the 50th year this year. Of course, the 1971 they started their journey as a cricket team, but they are having a fantastic the memories in that 50th years. So that they are for the memory of that their successful journey, they are celebrating their golden jubilee celebration, particularly in this year 2021, and for that memory they are organizing not only the cricket tournament, some cultural activities as well. So it's going to be a memorable year for Adhimaheshwari cricketers as they are completing 50th years. Here's the first volley of the over number 2, and Sharan into the operation from the Chidananda end. And the first ball, it's almost in the middle and off stump. Batsman not quite able to read the pitch of the delivery, turn of the delivery, completely beaten, and there is no possibility of any run at all. Sharan seaming in from the Chidananda and balls. That's been trying for the sweep shot. There was a direct hit, but umpire says not out. One more addition to total, and one more addition to the individual score of Prashant as well. Scoreboard moves on to 5 on the board for the loss of 1 wicket. For the latecomers and those who are late tuned to YouTube, the Abhimatha channel, you are watching the first match of day number 1 of this prestigious cricket tournament, and you are watching a second over. Round the wicket balls. That's when Naveen swept that one quite nicely down to square leg. Misfield there by the fielder there. Fawaz out there in the square leg and mid wicket. Between that, the batsman picked up a single. Scoreboard moves on to 5 on the board, 6 on the board for the loss of 1 wicket. That brings Nabi and Prashant into strike now. Sharan balls. Batsman went for the reverse sweep, just going over the head of the fielder there in the square leg. He picked up a single, and with that single, scoreboard moves on to 7 on the board. Different techniques to be implemented, especially when you're playing the ground like Adhimaheshwari Mahakalipatpu Jeppu ground. This time reverse sweep is looking for Naveen. This time didn't got that much of connection properly, but still managed to get the single. That's very important. They're rotating the strike each and every ball in this over. So that scoreboard ticking here in this over. Scoreboard moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. New Star Bhopal. Sharan balls, bowler's back drive, beautifully driven, as straight as an arrow, down to deep long off region. Before the fielder from wide is long off to fields the ball. The batsman got ample time to complete the single. One more over completed after completion of over number 2. New Star Bhopal searching for the right track. They got 9 for the loss of 1 wicket. So a lot of best wishes came here for Adhimaheshwari cricketers, because this is one of the oldest oldest cricket teams organizing. They're completing their 50th year, and one of the main sponsor for this cricket tournament is none other than Mr. Chidananda Nayak, General Manager of M.
Polonji Company, the leading team owner of Polonji Cricketers Qatar, and he is leading his team for more than 15 years very successfully, and he have won hundreds of tournaments in Qatar and have maintained the prestige till the date. And it was a really privilege for Adhimaheshwari cricketers. He one of the sponsor, the big sponsor for this cricket tournament as well, for this the Golden Jubilee celebration of Sri Adhimaheshwari Vaidyanath Seva Samiti. Third over is going to begin. Beautifully ball, flighted one. Ashwin, the magical, the magician, came into attack here from the Chidanand Nayak. Palanji Qatar end and starts with the delivery and a fantastic leg cutter, and batsman completely beaten. Again Ashwin bowls across the line. He wanted to swing his bat but not quite able to get the timing behind that shot. Direct it, not necessary in that occasion, and the batsman cross off for a single here. One more addition to total scoreboard moves on to double figure 10 on the board. Coming back to young friends Surwa, particularly in the season 2020, 20 and 21. That of course the mixed result here for young friends. They started their season, the new season, quite well with some winning a prestigious cricket tournament. Of course, one of the big achievement winning RRP Memorial Trophy, 30 overs format of games, UFC Trophy, and they gone the season's first CSI Trophy as well. And afterwards, they clinching some prestigious cricket tournament. But in the last 2-3 tournaments, they couldn't manage to perform as for their reputation. This time, Navin, we're going for the big shot. Get the distance. Will it going to be declared area? Yes, it is. 3 runs came from the bat of Navin. Flighted one, short pitch one. Batsman has got a plenty of time to rock back. So Navin lofted over down to deep mid-wicket boundary. That was a declared area. The dimension of cricket ground is concerned, not that much of a huge distance to cover that declared area towards the mid-wicket. So batsman picked up 3 runs for that stroke. With that 3 runs, scoreboard jumped into 13 on the board for the loss of 1 wicket. Ashwin changing his angle, bowling down the wicket. He bowls this time quicker one in the negation there from Ashwin. The batsman lit back across the line of the delivery. Ball is almost shaping towards the down the leg stamp. Leg by call by umpire. One more addition to total scoreboard moves on to 14 on the board for the loss of 1 wicket. Good partnership is progressing here for New Star Bhopal. Again, Plum in front of wicket. Ball pitched in a line. Batsman across the line of the delivery. Prashant tried to hit over the deep circle square leg, and no hesitation there from umpire. That was a Plum in front of wicket, pitching in a line, pitching in the leg stump, and then ball going to hit the midland of stump, and batsman pays the penalty. Prashant by playing that across the line of the delivery. Ashwin picks up a wicket here. Breakthrough. Partnership is broken. New Star Bhopal are now 14 for the loss of 2 wicket. Abhimatha TV, Abhimatha YouTube channels are having a live telecast of this wonderful cricket tournament. Abhimatha YouTube channel, one of the leading channel in South Kent district, has got plenty of names covering not only the cricket but even other activities, sports activities as well, such as Kambla, the traditional game of Tulnadu, and even the Kabaddi, all that volleyball, all that they are covering the most of the cricket tournaments as well. So that good over there from Ashwin. So little bit over which has got some runs. At the same time, he picked up a valuable wicket of Prashant. So 5 runs came from that over of Ashwin. So after completion of over number 3. And New Star Bhopal, they are searching for the right track. Scoreboard is 14 on the board for the loss of 2 wicket. Run rate just going at the rate of 4.66 runs per over. And of course, wait and see the incoming overs, how well New Star Bhopal will going to play the remaining deliveries. So change in bowling. Zubair is brought into attack. The one player is wearing a mask in the playing 11 of young friends Surva, as Zubair, one of the most experienced campaigner, brought into attack. Started with a slower one. Of course, he knowing for some space and quicker delivery, but this time he starts with the flighted delivery in the negation. Little bit slower one to the batsman. Beaten by the pace, and wicketkeeper behind the someone, so did the rest, and there is no possibility of any run at all. Score remains on 14 for the loss of 2 wicket. New Star Bhopal. Zubair back to his bowling mark.
Right arm around the wicket, pass umpire, beautifully ball, flighted one once again, almost drawing the batsman onto the front foot. Batsman is in a two mind whether go for the front foot or the back foot. By doing that, ball is just beating the outside edge of the bat, and wicketkeeper behind the stump. Mansoor, one of the safest fair behind the wicket, did the rest, and there is no possibility of an. That was a very good technique there from Naveen, almost covering the stump, fitting his front foot to the line of the delivery, and closing the face of his bat, and delicately lap shot comes into play to get the single down to square leg, and scoreboard moves on to 15 on the board. Bro, what and a delivery! Extra turn! And the batsman left a huge gap between bat and pad, and between that gap, of course, there is no chance at all for the batsman survive from the delivery from Zubair. The sharp incoming delivery, sharp upcutter, and batsman complete. Just look at it in the replay, how the ball is turned a lot. Even batsman has got really surprised with the turn, and before he is reading that turn, the ball is did the trick here, and the wicket number 3 of New Star Bappal are back into pavilion, and scoreboard is still remains on 15 on the board. What a delivery! Actually, he's a master of doing that. Zubair, I watched him for a long time for representing young friends. The some deliveries, which is unbelievable. It takes a little bit extra turn, and because of extra turn, he got a lot of success. And he got similar delivery the previous one. So new batsman in is Deepak facing next delivery. Again, this time line is down the leg stump. Batsman of course tried to flick that one, but ball missed the bat, but hits a leg, so deflected from the leg. So leg by called by umpire Farooq Ullal. In our commentary box, it's a friendly atmosphere. We are having my co-commentator after a long time. We are meeting each other. And the last year Adhimaheshwari Trophy we did the commentary with Mr. Sharath. A warm welcome to Mr. Sharath as well, and good morning to you, Sharath. And in my right, as one of the most popular name in Adhimaheshwari, of course, none other than Mr. Latif will go into have a job of scorer. So altogether the 4 overs completed, and searching for the right track, New Star Bhopal are struggling in the middle. 17 for the loss of 3 wickets, and wait and see what could be strategy from the batsmen of New Star to get some runs in the remaining 4 overs. Before then, next over will going to commence. It's time to ask Sharath to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you very much, and warm welcome Sharath for this prestigious cricket tournament. धन्यवाद सतीश जी। यहाँ पर 4 ओवर के समाप्ति पर 17 रन यहाँ पर बन चुके हैं, और देखना पड़ेगा यहाँ पर 8 ओवर का मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। टॉस जीतने के उपरांत पहले यंग मुर्गा ने फील्डिंग करने की यहाँ पर और न्यू स्टार बप्पा यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 3 विकेट गंवा लिए हैं 18 रन पर। गेंदबाजी के मार्ग पर शरण अपने कोटे के दूसरे बॉल शुरुआत यहाँ पर कर चुके हैं, और एक अच्छी क्षेत्र रक्षण यहाँ पर दिखाते हुए यंग प्रिंस हुआ। एक मंगलोर के प्रसिद्ध वो में माने जाते हैं, दिग्गजों में माने जाते हैं यंग प्रिंस का खिलाड़ी को। यहाँ पर ऑप्शन से 22 का इशारा अंपायर श्रीराज कुंपला द्वारा यहाँ पर करार दे रहे हैं। इस 2 रन यहाँ पर हासिल हो चुका है अतिरिक्त के रूप में। कुल मिलाकर रनों का संख्या स्कोरबोर्ड में आगे बढ़ता हुआ 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर की प्रगति पर शरण अब गेंदबाजी करते हुए दीपक को, और उल्टी खेलने की यहाँ पर कोशिश जरूर थी, लेकिन वहां पर उल्टी खेलने की यहाँ पर कोशिश जरूर थी, लेकिन वहां पर दोनों का यहाँ पर फैसला पूरा नहीं हो पाया। और कुल मिलाकर 21 21 21
दीपक आउट 21 बनले माफ कीजिए 21 रन बन चुके हैं 21 ऑन द बोर्ड 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। यहाँ पर बैट्समैन कार्तिक यहाँ पर आ चुके हैं न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स की ओर से। एक अनुभवी बल्लेबाज, जाने माने बल्लेबाज, एक न्यू स्टार बप्पाल का माने जाते हैं। लेफ्ट हैंडेड बाएं हाथों के बल्लेबाज हैं। अब देखना पड़ेगा बाएं और दाएं हाथों, दोनों बाएं हाथों के बल्लेबाज हैं नवीन और कार्तिक। और भी यहाँ पर गेंद बचे हैं, यानी कि खिलाफ खेल रहे हैं यंग फ्रेंड्स मंगलौर के एक बेहतरीन टीमों में माने जाते हैं यंग फ्रेंड्स क्रिकेटर्स को। यानी कि न्यू स्टार बप्पाल ने सवाल यहाँ पर पहले मैच में यहाँ पर किए हैं, किस तरह कम से कम 45-50 रनों का लक्ष्य यहाँ पर जरूर खड़ा करना पड़ेगा न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स को, क्योंकि वहां पर भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज, गेंदबाज जरूर। यहाँ पर शरण की गेंद, अच्छी गेंद थी, खेलने की प्रयास यहाँ पर जरूर किए थे कार्तिक ने, लेकिन डॉट एंड डिलीवरी कोई रन यहाँ पर नहीं बन चुका है। देखना पड़ेगा 5वां ओवर की चाल की पर शरण अंपायर शिवाज को पार करते हुए लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट। और इस बीच फिर से उल्टे खेलने के प्रयास, आपके बाद भी डॉट बॉल, बैक टू बैक डॉट बॉल। एक अच्छी ओवर यहाँ पर कहना पड़ेगा शरण की, यानी कि 5 ओवर की समाप्ति पूरा हो चुका है और न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स का टीम का स्कोर है स्कोर बोर्ड में 21 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 21 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। आतिफ को फिर से लाया गया गेंदबाजी पर। पहले ओवर में आतिफ ने काफी बेहतरीन तरीके का जिम्मेदारी के अपने ऊपर लेते हुए 4 रन दे चुके थे। और देखना पड़ेगा छठा ओवर के चालती पर गेंदबाजी करने के लिए माइक पैटर्न से तैयार। फिर से गेंदबाजी आतिफ अपने कोटे की शिवानंद नायक एंड से अंपायर फारूक लाल को पार करते हुए पहली गेंद, बढ़िया गेंद थी, छूटे पूरी तरह से नवीन। गेंद और बल्ला सामना नहीं हो पा रही है, यानी कि रनों की तलाश में यहां पर न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स। आतिफ फारूक लाल को पार करते हुए फिर से लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, स्वीप करने के प्रयास यहां पर कामयाब, सिर्फ एकमात्र रन मिलेगा। और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 22 रन 4 विकेट के नुकसान पर 22 फॉर 4। यहाँ पर बढ़िया गेंद थी और पूरी तरह से गिर चुके थे यहाँ पर आतिफ। लगभग का इशारा, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। कार्तिक यानी कि न्यू स्टार बप्पाल के एक अनुभवी बल्लेबाज जरूर है, लेकिन यंग फ्रेंड्स के गेंदबाजी यहाँ पर इसी तरह निकल रही है, यानी कि बल्ला और गेंद का सामना नहीं हो पा रही है। न्यू स्टार बप्पाल को अभी रनों का तलाश है, कम से कम 45-50 रनों का लक्ष्य को यहाँ पर खड़ा करना है। किस तरह बल्लेबाजी आगे आने वाले गेंदों में क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा। आतिफ फिर से तैयार, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज नवीन स्वीप करने की कोशिश, विकेट कीपर के हाथ गेंद। यहाँ पर 2 रन यहाँ पर भी मिलेंगे और उसके 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी साझेदारी निभाना पड़ेगा यहाँ पर न्यू स्टार बप्पाल को, क्योंकि यहाँ पर आतिफ जैसा गेंदबाजी यहाँ पर करते हैं। फिर से स्वीप शॉट, एक मिलते हैं। इसी तरह पूरा खिलाड़ी एक रन की तरह अपनी कामयाबी को आगे ले जाते हुए टीम का स्कोर बोर्ड को बढ़ाने में काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। यहाँ पर फिर से उल्टी खेलने के प्रयास कार्तिक की, और यहाँ पर फिसल चुके हैं, गेंद जा चुकी थी स्क्वायर लेग की दिशा पर और एक रन को यहाँ पर भी मिल चुका है न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स के कार्तिक को। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति हो चुका है और न्यू स्टार बप्पाल क्रिकेटर्स का स्कोर है 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 12 स्कोर 27 ऑन द बोर्ड।
27 रन बन चुके हैं। माफ कीजिए, 27 रन बन चुके हैं 4 विकेट गंवाने के बाद 6 ओवर के समाप्ति के बाद। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 overs 27 for 4। इमरान और एक जाने माने गेंदबाज यंग फ्रेंड्स उर्वा क्रिकेटर्स के और महाकाली परपू मैदान पर यह मैच खेला जा रहा है। आदिमहेश्वरी ट्रॉफी 50 साल का गोल्डन यहाँ पर है आदिमहेश्वरी ट्रॉफी 50 साल का गोल्डन यहाँ पर ये चक्का, यहाँ पे देखने पड़ेगा पहला चक्का। विकेट चक्के की मदद से रनों का संख्या आगे बढ़ चुका है और स्वीप करने के प्रयास, लेकिन विकेट कीपर के हाथ में गेंद नहीं आ पा रही थी। बाउंड यहाँ पर एकाची डिसीजन यहाँ पर कहना पड़ेगा। यहाँ पर नवीन की समझ की बाहर की गेंद और क्लीन बॉल होते हुए, यानी कि ये क्लीन बॉल है और इस बीच 11 रनों का साझेदारी यहां पर हो चुका है नवीन। 13 रनों की साझेदारी यहां पर जारी थी, यानी कि किस मौके में कैसा रन चाहिए और उसी मौके में एक छक्का लगाते हुए अपनी टीम के स्कोर को बढ़ाया है कार्तिक ने और टीम का कुल मिलाकर स्कोर है 34 रन। आसिफ अब आ चुके हैं कार्तिक का साथ देने के लिए और नवीन आउट होने के बाद एक दाएं हाथ की बल्लेबाज आइटम रवंदरी के फुल टॉस के उठाने की कोशिश और नवीन आउट होने के बाद यानी कि पहले नवीन क्लीन बॉल बल्लेबाज आइटम रवंदरी के फुल टॉस के उठाने की कोशिश है और यहाँ पर भी जिस तरह पहले गेंद पर कार्तिक ने धक्का मारे थे और उसके बाद यानी कि पहले नवीन क्लीन बॉल और उसके बाद एक लगभग के रूप में 1 रन मिलेंगे तो 2 गेंदों में 2 यहाँ पर हासिल किए हैं इमरान ने। हैट्रिक चांस अब मिलेगा। शाकिर आ चुके हैं एक न्यू स्टार भोपाल के और एक समझदारी के बल्लेबाज हिवाशिप खेलने की कोशिश में कामयाब हो चुके हैं। सिंगल रन मिलेगा और इस सिंगल रनों के साथ स्कोर बोर्ड में जमा हो चुका है कुल मिलाकर 35 रन। 35 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इमरान तो क्या गेंद कार्तिक ने जहां पर गेंद जा रहे हैं लॉन्ग ऑफ की दिशा पर और यहां पर मिलेंगे 2 रन और कार्तिक की पूरी जिम्मेदारी यहां पर अपने ऊपर न्यू स्टार भोपाल की जिम्मेदारी का तेल यहां पर निभा रहे हैं और इस 2 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हो चुका है। कुल मिलाकर 7 ओवर का समाप्ति न्यू स्टार भोपाल क्रिकेटर्स का स्कोर है 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर 37 for 6 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 overs। पहला इनिंग्स का आखिरी ओवर यहां पर बचे हैं। अश्विन राज गेंदबाजी के मार्ग पर आ चुके हैं। एक मंगलोर के जाने माने गेंदबाजियों में माने जाते हैं, ऑलराउंडरों में माने जाते हैं, आइकॉन प्लेयर में माने जाते हैं। अश्विन राज को देखना पड़ेगा महाकाली परपू इस मैदान पर किस तरह बढ़िया गेंद यहाँ पर आइकॉन प्लेयर में माने जाते हैं
अश्विन राज को देखना पड़ेगा महाकाली पर पुलिस को मैदान ये पूरी गेंद और उसी तरह अब शाकिर पवेलियन पर वापस, जहां पर न्यू स्टार बप्पल का विकेट गिर चुका है। साथ किरण नया बल्लेबाज आ चुके हैं, 7 विकेट गंवा लिए हैं सिर्फ 37 रनों पर। स्कोर बोर्ड में स्कोर तो मिल चुका है। अब अश्विन राज आखिरी ओवर का दूसरी गेंद लेते हुए तैयार, अंपायर फारूकुल्लाह को पार करते हुए आसम की गेंद फिर से उल्टे खेलने की कोशिश, यहां पर भी विकेट गंवा लिए हैं। जहां पर गेंद मंसूर के हाथ फील्ड हो चुकी थी, फिर भी रन लेने की कोशिश यहां पर, और एक विकेट पवेलियन पर वापस। किरण पवेलियन पर वापस हो चुके हैं। नया बल्लेबाज रक्षित आ चुके हैं 900 की दिशा में, रुका दिया। नया बल्लेबाज रक्षित आ चुके 900 के दिशा में, रुका दिया कि उसको सीमा रेखा की तरफ देखना पड़ेगा। ये क्या इसका यहाँ पर और इस छक्के की मदद से रनों का संख्या आगे बढ़ता हुआ 43 रन बन चुके हैं। 43 ऑन द बोर्ड। धनुष यहाँ पर आ चुके हैं और खेलने की कोशिश, बल्ला और गेंद का सामना नहीं हो पा रही है। और इस ओवर में एक जरूर 6 रन मिले हैं कार्तिक को। कुल मिलाकर इन्होंने अपने कोटे में जमा किए हैं 11 रन, जो 15 रन जोड़ लिए हैं। 2 छक्का इनमें मौजूद है और 22 का इशारा यहाँ पर, और एक अतिरिक्त रन यहाँ पर जुटा हुआ टीम के खाते में। कुल मिलाकर न्यू स्टार बप्पल ने आखिरी में भी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन जोड़ लिए हैं। जीतने के लिए चाहिए यंग फ्रेंड्स युवा क्रिकेटर्स को 45 रन, यानी कि यंग फ्रेंड्स युवा में भी अच्छे अच्छे बल्लेबाजी और मंगलोर के एक दिग्गजों में माने जाते हैं यंग फ्रेंड्स युवा क्रिकेटर्स को। किस तरह वो 48 गेंदों में 45 रनों का लक्ष्य को पूरा करते हैं, देखना पड़ेगा यंग फ्रेंड्स युवा। ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರೋಫಿ 2021ರ ಪ್ರಥಮ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಪರ್ಪು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕೆಯನ್ನು ಸೋತಿರತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಬಪ್ಪಾಲ್ ತಂಡವು 8 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಜಯಿಸಬೇಕಾದರೆ 48 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 45 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರರ ಕೈಚಳಕ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬಹುದೇ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಬಹುದೇ, ಎಲ್ಲವೂ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾಥಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಫೋನನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you very much, Sharath. So, before the start of the innings of Young Friends, I would like to call upon SNGT cricketers as well as Shri Vishnu Kudpadi,
both the teams, it's first call for both the teams. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ SNGT ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕುಡ್ಪಾಡಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕರೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ರನ್. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ lovely shot, good placement. That's what Bashit is looking for. But there is a protection in the deep. They're coming back for the second. In comes a throw, but the throw is not that quick enough. Of course, that throw coming into the wicket keeper's hand. So batsman has got plenty of time to complete that couple of runs. Bashit is off the mark to the couple of runs, and young Fensurwa started their journey. And 45 going to be a target against the new star Bapal Shakir. Right, above the wicket to Bashit drives that one towards a deep long on region. They're running hard, but the protection there in the deep long on, batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 3 on the board without loss of any wicket. Young friends, they came into this cricket tournament as one of the favorite of winning this match. They got two more good teams in this group A. That is, one is NM Jeppu, and then Gori Young Boys has got in that group A. So going to be a very, very interesting the pool group A going to be for the day number 1. So next the previous delivery, which is the dotted one, as Imran not quite able to get the timing behind that drive, and ball this time straight to the hands of shot cover. That was a sider without seeing the fielder after he drives that one down to cover region, but not having blind run, I will tell you, without seeing the fieldsman. He just left his crease for a single, pays the penalty for that big blow. Imran is a kind of batsman who can be the very handy, the man in form. Of course, still remember his innings in Gori Young Boys Trophy 2021 when he represented his home team. KFC Krishnapura, he is the one, is the leading from the front. He got a lot of runs from his bat, but quite unfortunately he couldn't manage to contribute from the bat because he just back into pavilion in the form of run out. Good piece of fielding there by the short cover, because that ball went very quickly, and batsman no chance to go back, because the throw is really quickly coming from the fielder towards the commentary box, towards the little correction towards the hands of wicket keeper. A new batsman, the captain of the side, Ajmal, straight away one of his favorite and delicate shot, just using the pace of the ball and just opening the pace of his bat, and guiding it down to, steering it down to short third man region for a declared area. Couple of runs here for Ajmal. So completion of over number first. Young friends are 5 for the loss of 1 wicket. 5.625 runs per over was the required run rate in the beginning of Young friends, and they lost the first wicket in that first over as well, in the name of Imran is out for duck by facing 2 deliveries. Is becomes run out. 5 for the loss of 1 wicket. There's a sudden change in bowling from Chidanand Naik, Doha end. I already mentioned the Chidanand Naik Jeppu, one of the main sponsor for this cricket tournament, and he's sending his the best wishes message to Adhimaheshwari cricketers for the success of this wonderful cricket tournament in the name of Sri Adhimaheshwari Golden Jubilee Trophy. Down the leg stump, batsman going for the big shot. Karthik is a new bowler, has been introduced. Karthik, who played a magnificent innings for his team, who hit 2 sixes. It's not an easy in the morning, and he clearing the ground quite comfortably with this technique of and timing. This time the Bashit right under the pitch of the delivery quite neatly plays it down to deep long on for a walkable single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board for the loss of 1 wicket here in over number 2 in progress. Karthik, very useful and very experienced bowler. This time a full toss delivery. Ajmal tried to play across the line of the delivery. There's a wide throw coming from the fielder, deep fine leg, but back up from the deep long on region. So the batsman have to settle for the single. So with that single, scoreboard moves on to 8 on the board. Full toss delivery, 7 on the board, little correction. And Ajmal free meditated sweep shot he was attempted. This time going for the big shot, ball high up in there. Fielder underneath it, and he takes the catch. The jersey number 21 takes the catch down a deep long on, high up in there. Batsman just hoisting it over, taken an aerial route, but didn't got distance what he wanted. I especially mentioned in the morning, it's not that much of easy.
what Karthik is did in the previous innings of Bappal, what he got two sixes with the timing, with the power, but here we are not seeing that kind of power behind that stroke from Bashit. He pays the penalty for that, and we have a second wicket of young friends who are back into pavilion. The right time here for Bappal, new star Bappal to bounce back in this match because they got 45. It is not quite underestimated total where they can win the match. If it picked another two wickets, they were definitely coming into the driver's seat. It might be the equal battle we are expecting for a chance of run out that we're talking about. Direct it has gone. Atif is gone, and all in sudden we can see that the complexion of the match is changing here. The body language of new star Bappal looks to be it says 100% effort in the game. They know exactly they're playing against one of the top ranking teams, Young Friends Uruva, and they are putting them into the under pressure situation by picking up three valuable wickets. What a great effort from that fielder. Absolutely pick up and throw into the stumps, and batsman finding himself short of his crease is back into pavilion. Look at that throw in the replay. It's not an easy job to do, I will tell you, and that was a direct hit, batsman short of his crease, and a fantastic effort there from the fieldsmen of ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಪ್ಪಾಲ್. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಕುಡ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಈ ಕೂಡಲೇ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವಿಷ್ಣು ಕುಡ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ SNG ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. So new batsman Imtiaz came into middle with a lot of responsibility. Karthik bowls, beautifully bowled. Imtiaz almost off the back foot, covering his stump. A little bit short pitch and little bit extra bounce here for Karthik. And the batsman giving full respect to that one. The completion of good over there from Karthik. What a fantastic all-round performance here from Karthik. Contributed from the bat, contributed from the ball. And now young friends are a little bit struggling in the form of run rate required as well. Their completion of 2 overs, just a 7 on the board for the loss of 3 wickets. Just a 2 runs conceded there by Karthik. And he picked a valuable wicket of Bashit, caught at deep long on. The great performance here from Karthik. Wonderful performance. It's not enough for any player being the experience, but converting that experience into performance is so important. And Karthik so good in it, in all what he has performed for his team. 2 sixes with the difficult conditions against young friends Surwa. It was a great achievement. Then he came into ball. Then bowled a very good tidy over of just 2 runs and a wicket, and brought young friends Surwa into back foot and brought his team into front foot. But match is not yet over. Young friends Surwa, one of the formidable batting department. What did they got? They can bounce back anywhere and any time. Here is the first ball. Oh, Ajmal little bit across the line of the delivery, quite dangerously played. I will tell you, the line is a little bit outside the line of off time. Batsman trying for the sweep shot, but he missed the ball completely from his bat, and there is no possibility of any run. Deepak from the Chidanandak Jeppu end. Balls slipped out in the relegation. Not only this bowler, even Atif of young friends Surwa has got the same problem when he was dragging his back foot and trying to get some pace. He's a little bit slipped out. And here is Deepak, bowled a wide one. And this is the second wide. This is not a good bowling there from Deepak. Need not continue that kind of mistakes because they're not depending a big total. They're just depending a 45 to win the match for the opposition. And you need to be very strict in your line and length. The 2 extras then considered that will going to release the pressure from the batsman. Batsman of course did be under pressure of losing 3 wickets. Before giving that chance here for the batsman to settle down mentally. When you are bowling wides, it's going to be a little bit confident coming back in favor of batsmen. So that's why it's so important for the bowlers to consistent in line and line. They need to bowl good line and line. This time, top edge, ball is in there. Oh, drop the catch. Can you believe this? What could be a chance of catch there? What could be a chance of wicket here for friends Bappal? The fielder in the short fine like this, charging into the ball. Tried to take the catch, a little bit low down to him. Look at the effort from him. But he couldn't manage to hold the catch. Ball is just slipping out of his hand, and batsman got a life. Can you believe this? Life for the batsman like Ajmal. He will going to definitely take advantage of that one. Lovely shot, imperious extra cover there from Imtiaz, one of the technically very sound player, off the back foot in the dedication, finds the gap, and he got a very valuable couple of runs in that lovely looking extra cover try. Scoreboard moves on to
12 on the board for the loss of 3 wicket. Deepak ball slower one. Imtiaz negotiated very well, lofted that one quite safely down to deep long off. One bounce collected by the deep long off fielder, and batsman got ample time to complete the single. Then scoreboard moves on to 13 on the board for the loss of 13 for the loss of 3 wicket. Deepak. Oh, that was a spectra wide, absolutely spectra wide. No ball called by umpire, right call from umpire, because that was going over the head of the batsman for long way and out of the pitch as well. It is going to be a no ball as far the present rules and regulation is concerned, and it's going to be a no ball. Chance here for the batsman for the free hit. 2 runs, gifted runs to be added to total scoreboard moves on to 15 now, and more than anything else, it's going to be a free hit delivery. Wait and see how Imtiaz will going to take the advantage of that free hit delivery. Deepak was Imtiaz, lofted over. The building out of this cricket ground for a maximum. All that momentum what the Friends Bapal has got, they just missing it because of the mistake from the bowler. The runs are coming like a fast flowing of rivers of the fast flowing waters of the rivers for young friends. Again, this time chip that one over the head of that infield into the roof for a couple of runs declared, a couple of runs here, and because of that big over, young friends they rightly back into this game. 15 runs came from that over of Deepak. Can you believe this? All the efforts are gone in vain. All the efforts are gone in vain by the 2 opening bowlers are did, the Shakir and then Karthik. And both the bowlers are really bowled very well, but one mistake from the bowler Deepak in the over number 3. They looks like they are onto the back foot, and young friends are once again they're back into this game very strongly. Karthik brought into attack, right move there by the captain because they needed some wicket, needed some breakthrough. Delicately played there by Ajmal. That was a clever thinking, absolutely clever. This is what cricket was all about. That was elegant and delicate. Absolutely, just allow the ball coming into his bat, opening the pace of the bat, just shaping that one towards the deep gully and deep third man between that, and got a couple of runs and score jumped into 25 on the board. Karthik, oh, beautifully bowled. That was a sharp incoming delivery. The batsman Ajmal once again looking for the steer that one down to third man division. Luckily that ball didn't got that much of turn what Karthik is expected in this previous delivery. He missed it. This time lovely scoop shot over the deep backward square leg for a couple of runs. Now what we can say that the batsmen are back. The confidence is strongly back, and Ajmal is now playing with a free mind, and score jumped into 27 for the loss of a 3 wicket. The partnership is going very dangerously, and each and every run takes the match away from the opposition, and Ajmal being the captain of the side got a life earlier, and he just capitalizing that life with the runs. This time again one more chance missed out. Looks like that square leg fielder couldn't manage to hold the catch again. The same fielder, I think so, the previous in the beginning they dropped the catch, now they're dropping the catch. Ajmal across the line, he got a couple of runs here. The declared area down at square leg, that was a gallery, spectators gallery down in the square leg. So batsman got a couple of runs quite easily. Then scoreboard moves on to 29 on the board. This is just over number 4 in progress. Karthik, oh, what a delivery! Quicker one, sharp incoming delivery. Look at Ajmal there. Quite hardly he managed to save his wicket, because that was a quicker one, sharp incoming delivery there from Karthik. The last weapon which is Karthik is produced to get the wicket, but batsman negotiated very well in the last moment. So 4 overs completed, and young friends were strongly back into this game, scoring 29 runs in 4 overs. And wait and see now another 16 runs to get in remaining 4 overs at the rate of required of 4 runs per over. And before the next over will go into commence, I would like to
invite Mr. Sharath for the further explanation of the match in our national language. Thank you very much. धन्यवाद मिस्टर सतीश जी। यहाँ पर विकेट गंवा लिया है और जीतने के लिए चाहिए था 16 रन, जहाँ पर 2 ओवर में 7 रन यंग फ्रेंड्स उर्वा ने बनाए थे। उस तरीके उस टाइम एक अच्छी ओवर यहाँ पर प्रगति बढ़ता है। एक ही ओवर में 15 रन हासिल किए। उसके बाद जैसे मछली को जाल बिछाते हैं और उसी तरह न्यू स्टार भोपाल ने पहले 2 ओवर में जाल बिछाए थे और तीसरे ओवर में उसको पूरा 15 रन देके जाल को तोड़ा, तोड़ दिए थे। और यंग फ्रेंड्स उर्वा अब न्यू स्टार भोपाल क्रिकेटर्स के दोनों हाथों के मैच में यहाँ पर देखना पड़ेगा 16 रन की जरूरत है। जुबैर फवाज बल्लेबाज यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर जीतने के लिए रखा था 45 रनों का लक्ष्य। बढ़िया शो खेलने की कोशिश, लेकिन ऑफ स्टंप के अंदर की तरफ गेंद ज्यादा हो चुके थे विकेट कीपर के दस्तानों के हाथों में। यहाँ पर टारगेट रखा है 45 रनों का और फवाज स्ट्राइकर की दिशा पर तैयार। 4 विकेट गंवा लिए हैं। देखना पड़ेगा इस मैच में कौन यहाँ पर जीत हासिल किया जाएगा। और यहाँ पर बढ़िया गेंद फिर से पहले गेंद में यहाँ पर इस ओवर में काफी नियंत्रण ला चुके हैं न्यू स्टार भोपाल में। पहले गेंद में विकेट पा चुके हैं और उसके बाद 2 गेंदें डॉट एंड डिलीवरी। गेंद को खूबसूरती के साथ एक रन यहाँ पर मिलेगा। लॉन्ग ऑफ की दिशा पर क्षेत्र रक्षक मौजूद है और बहुत ही अच्छी तरीके से गेंद को गैदर किया और फवाज ने अपने स्ट्रोक को बदल चुके हैं और इस 1 रन के साथ रनों का सिलसिला आगे बढ़ता हुआ 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर 30 for 4। गेंदबाजी के मार्ग पर तैयार। फिर से अंपायर श्रीराज को पार करते हुए एकदम ओवर विकेट स्वीप करने के प्रयास में नाकामयाब। बार बार चूक रहे हैं बल्लेबाज, यानी कि गेंदबाजी इसी तरह जारी है। शाकिर की एक बढ़िया गेंदबाजी महाकाली पड़पू मैदान पर इस बार जारी है। यहाँ पर ड्राइव किया गेंद को फिर से गैप बनाकर कवर्स की दिशा पर और फवाज फिर से पहुंचे स्ट्राइकर की दिशा पर। यंग फ्रेंड्स उर्वा क्रिकेटर्स के यहाँ पर 5 ओवर समाप्त हो चुका है और 31 रन पर विकेट खो चुके हैं 4। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 overs 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। यहाँ पर जीतने के लिए चाहिए अब सिर्फ 14 रन 18 गेंदों में। 18 balls remaining 14 runs to get। 18 balls remaining 14 runs to get। यहाँ पर आदिमेश्वरी ट्रॉफी 2021 का मैच यहाँ पर खेला जा रहा है। 50 साल के ये इनॉग्रेशन यहाँ पर आज सुबह हो चुका है और बहुत ही एक अच्छे तरीके से हम लोगों को साकार दिए है चिदानंद नायक एम पलवंजी कतार इन्होंने, और इस मैच को आयोजित किया है आदिमहेश्वरी वैद्यनाथ सेवा समिति ने। और गेंदबाजी के मार्ग पर प्रशांत एक अनुभवी गेंदबाज न्यू स्टार भोपाल के और स्वीप कर दिया गेंद को। यहाँ पर गेंद ज्यादा दूर नहीं जा पाई। फाइन लेग की दिशा पर से गेंद सीधे स्क्वायर लेग की दिशा पर पहुंची और फील्डर ने 2-4 कदम दौड़ लगाते हुए गेंद को फील्ड कर पाते 1 रन बनाने का मौका बैट्समैन के पास। और इस 1 रन के साथ रनों का संख्या बढ़ती हुई ड्राइव किया गेंद को लॉन्ग लेग की दिशा पर। देखना पड़ेगा यहाँ पर अंपायर का इशारा क्या हो सकता है। 2 रनों का इशारा। सही डिसीजन फरमाया आपने, यानी कि डिक्लेयर का एक दीवार यहाँ पर खड़े हैं और डिक्लेयर का शॉट लग चुका है। यहाँ पर 2 रन मिले हैं फवाज को और इस 2 रन 3 रन यहाँ पर अंपायर का इशारा माने जाते हैं।
ತೀರ್ಪುಗಾರನ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಪ್ತಾನನು ತೀರ್ಪುಗಾರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಅಭಿಮತ ಲೈವ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮುಖೇನ ದೇಶ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿಯೂ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. यहाँ पर अंपायर का आखिरी इशारा, अंपायर का आखिरी इशारा, यहाँ पर रनों का 2 रनों का इशारा और इस 2 रनों के साथ रनों का संख्या आगे बढ़ता हुआ 34 रन ड्राइव किया. बहुत ही सुंदरता की गेंद थी ये. आखिरी मौके पर फवाज ने बल्ला घुमाए लॉन्ग ऑन की दिशा पर एक सुंदर की तरफ से एक रन तालमेल के साथ पूरा कर चुके हैं. ऐसे एक रन के साथ रनों का संख्या आगे बढ़ता हुआ 35 रन, 10 रन दूर है इस मंजिल पर पहुंचने के लिए. और बहुत ही बढ़िया गेंद पहचान के यहाँ पर और एक सोच समझ का खेल यहाँ पर निभाते हुए, जिम्मेदारी का खेल यहाँ पर निभाते हुए, कच्ची साझेदारी निभाते हुए यंग प्रिंस हुआ क्रिकेटर्स देखना पड़ेगा. 34 रन पर पहुंच चुका है. और लेग स्टंप से बाहर गेंद, ये गलत गेंद है. यहाँ पर फारूकुल्लाह कह रहे हैं ये गलत गेंद है, यानी कि बिना लाइन में जा रहे हैं, वाइड का इशारा. 37 रन और प्रशांत की ये गेंद को खूबसूरती के साथ ड्राइव किया फवाद ने फिर से, जहां पर एक रन की तरह अपनी टीम की रनों को आगे ले जाते हुए यंग प्रिंस उर्वा क्रिकेटर्स पहुंचे हैं 38 पर. 38 रन 4 विकेट गंवाने के बाद. आउट ड्राइव पर कवर्स की दिशा पर कवर्स की दिशा पर सिर्फ एकमात्र रन यहां पर मिलेगा. और इसको कहते हैं यंग फ्रेंड्स उर्वा का समझदारी का खेल, यानी कि पहले यहां पर न्यू स्टार भोपाल में एक मजबूत यहां पर फील्डिंग रचाई थी. 2 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे और उसके बाद रनों का बारिश यहां पर यंग फ्रेंड्स उर्वा को हासिल हो गया. और ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर 6 ओवर के समाप्ति पर यंग फ्रेंड्स उर्वा क्रिकेटर्स का स्कोर बढ़ती हुई 49 रन पर 39 रन पर बन चुके हैं और 4 विकेट के नुकसान पर. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स 39 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट. सिर्फ 6 रन की जरूरत इस मैच को जीतने के लिए. बचे हुए 12 गेंदों में 12 बॉल्स टू गो, 6 रन टू गेट. गेंदबाजी के मार पर फुल टॉस गेंद यहां पर पूरी तरह से यहां पर मिसफील्ड कर चुके थे. एक रन सिर्फ यहां पर दौड़ कर लिया गया. इस 1 रन के साथ रनों का संख्या आगे बढ़ता हुआ 40 रन. यहां पर ड्राइव किया टाइमिंग के साथ, जहां पर देखना पड़ेगा यहां पर ये बाउंड्री, पहला बाउंड्री निकलता हुआ फवाज के बल्ले से एक बढ़िया टाइमिंग शॉट इसको कहते हैं. और इस 4 रन के साथ मंजिल के पार पहुंच चुके हैं. यंग फ्रेंड्स उर्वा के स्कोर है 44. मैच बराबर में बदल चुका है. मैच स्थाई यहां पर 1 रन पूरे कर चुके. इस 1 रन के साथ यंग फ्रेंड्स उर्वा पहुंचे दूसरे राउंड पर. और दोनों टीमों के मैं धन्यवाद करता हूं, यानी कि यह पहला मैच है. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು SNGT ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಗುಡ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಕೆಗಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಆದಿಮೇಶ್ವರಿ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ 16 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಥಮದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ SNGT captain and Sri Vishnu Kurpadi captain, please report the commentary box and go for the toss immediately. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯುವ ತಂಡದ ಅಜ್ಮಾಲ್ ಇವರು ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಜ್ಮಾಲ್, ತಮಗೆ ಒಂದು ಬಹುಮಾನವಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ವಿವೇಕ್ ರವರು ಅಜ್ಮಾಲ್ ಇವರಿಗೆ
ಈ ಪದಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅಸ್ಮಾಳ್ರವರೇ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿವೇಕ್ರವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿವೇಕ್. ಬೈಜಾರ ಟಾಸ್ಗೆ ఉండే లేవలు ఉలేక పెట్టలేవు ఉలే ఎవలు మూలు అలే 180 1080 I request two teams captain SNGT captain and Sri Vishnu Kurpali captain, please report the commentary box. ಅಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು